Okay, being a Muslims, we have very firm belief that this is strictly prohibited and haram, our religion. And no matter what in our lives, we should try to our best, like to avoid it as much as possible. So the purpose of studying this is to relate percentages with it, okay, and definitely taking Cambridge exam. Okay, interest. Now there are different types of interest in banking systems. One is the simple interest, and then the other one is the compound interest. This is the dangerous one. Most of the bank they follow the compound interest. Now let's see their basic working phenomena. Then I'll take you to the formulas. But we need to understand the logic, the science behind each of these two types. So let's consider a scenario. Okay, first of all, basic definition of interest. For example, I borrowed 100 rupees from a bank. I borrowed 100 rupees from a bank, and in return, bank asked me that you need to return 150 to me. You need to add another 15 to it, and this is what we need in return. Now, this is the actual amount which I borrowed from the bank as a loan. This is additional amount which I am paying for nothing. Okay, and both of these combined together, this is what I have to pay back to the bank. So in a mathematical language, now there are two different perspectives. Now one is the perspective of a bank and one is the perspective of the one who is borrowing the loan. So sometime examiner will ask you to act as a bank, and sometime he will ask you to act as the one who is borrowing the loan. And interest, it's not necessary that only bank follow this policy. Sometime they have policies for us, the bank accounts for us as a saving accounts in which we deposit few money and they give us the profit. Now the the language, the terminology, it changes. We need to understand the terminology so that we can crack the question easily that what examiner is asking about. So these are the three main things here, but the language changes. Now I'm talking on a perspective. Let's talk from the perspective of a borrower. So if I'm a borrower, this is the loan I borrowed. This is the loan I borrowed from the bank. Okay, this is the additional amount. So this is basically known as interest. This is known as interest, added interest. Loan is basically known as principal amount, the actual amount which we borrowed. Okay, interest is the money on top, additional amount. And this is the payable amount. This is what we are supposed to pay. Now, these are the terminologies used by the bank for the borrower. That this was your principal amount, this is the interest on top of it, and this is the payable amount, which this is what you're supposed to pay us now. Now, from the perspective of the bank, this figure, which they lent us as a loan, is known as their investment. This figure is known as their investment. This figure is known as their profit. And this figure, they call it as the value of their investment right now. Value of the total value of their investment. Sorry, value of investment. The value of the money which they invested on us. Earlier, they had 100. Now, the same 100, they are able to convert it back into 150. So this is what they call. So from different perspective, so you need to know the terminologies of both perspectives. Sometimes you may not be the bank, you may be the one, any individual, and they ask, the question comes in as you deposited the money into the saving account of a bank, then they are going to use the very same. So this was my investment. If I'm depositing the money into the account, so this is going to be my investment.
the interest which bank is going to pay me for keeping my money into their bank so that they can use it for the business, that is known as the profit. And then I deposited $100 or 100 rupees. Let's say after a year, the value of my money is now 150. Earlier it was 100, now it is 150. So from different perspectives, they will be using different terminologies and different languages. But these are the three main things. Okay. The amount which is borrowed as a loan, the additional amount which comes out of nothing. This one, the total payable amount, which includes our 100 rupees as a principal amount and the 50 additional. This is sum of these two. Okay. Now let's dive into the basic phenomena and the principle how the banking system works. I'm not going to dive into much depth as that you study in accounting. I don't know that much details. I only know the mathematical part. Now the simple interest, let's consider a scenario that there is a bank A which is offering a loan based on simple interest, and then there is a bank B which is offering a loan based on a compound interest policy. Now, for example, the principal amount from there is a person A who borrows for example, I borrowed a loan from both the banks, same amount, 100 rupees from here and 100 rupees from here. Let's say I borrowed it for 3 years or 4 years. Now, this is how it works. First year ends. Now, the policy is 10% per year. 10% per year. Both are offering 10% per year, 10% per year. The only difference is this is simple interest and this is compound interest. We will see how the two policies differ from each other. First year ends. At the end of the first year, for example, if I want to pay back to the bank after the first year, maybe I borrowed it for 5 years, but at the end of the first year, I decide to pay it back. So 100 rupees was the actual amount plus the 10% of the principal amount. So you know how to calculate this. So 10% of 100, which is going to be 10. So 100 plus 10 is 110. Okay. Second year ends. 100 was the principal amount. Again, sorry, not 110 was the carried forward amount. And then 10% of the principal amount. How much is this going to be again? No, this part. This is going to be 10. This was 10 earlier as well. This is going to be 10 again. So 110 plus 10 is 120. So third year ends. 120 is the carried forward amount from the previous year plus 10% of 100 again. This is 10. So 120 plus 10 is 130 rupees. Fourth year ends. 130 carried forward. 10% of the 100 again 10, which is going to be 140. So now the important thing to notice here is every year there's a fixed amount which is being added into the previous amount, which is 10 rupees. 10 rupees added here, another 10 rupees added here, another 10 rupees added here. Okay. Now moving to the compound interest. So first year ends. 100 plus 10% of the principal amount. 100 cancels out. 110. So by the end of first year, things are exactly the same. Now this is where it gets changed. Second year ends. Carried forward amount is 110, exactly in the same way. Carried forward amount from the previous year is 110 plus
10% of not the principal amount. 10% of the carried forward amount. अब 100 का 10% ज्यादा होगा या 110 का 10% ज्यादा होगा? 110 का 10% ज्यादा होगा और ये आपके पास बनता है ये कितना आता है? 11 आता है. So 110 plus 11 is 121. So see, 1 रुपया इधर ज्यादा होगा. Okay. Third year ends. 121 plus 10% of the bank says forget about what you borrowed, forget about the end of first year. Last year you were supposed to give us 121. So 10% of 121. Now this is going to be bigger than 100. 10% of 100 this is even bigger than 10% of 110. ये कितना आता है आपके पास? 12.1. 10% of 121 कितना आएगा? 12.1 ही आता है. 12.1 आता है ना. अब 12.1 को इसमें ऐड करें कितना आएगा? 132. तो जी यहां तक 133.1. तो यहां तक पहुंचते पहुंचते $3.10 का फर्क पड़ चुका है. सो द मोर यू गो फॉरवर्ड ज्यादा डिफरेंस आता जाएगा. ठीक है, ये छोटी अमाउंट थी. जितनी बड़ी अमाउंट होगी, जितना बड़ा इंटरेस्ट रेट होगा और जितना ज्यादा गैप आएगा उतनी ही ज्यादा कभी कभी ये इतना एक्सीड कर जाता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से भी बहुत बढ़ जाता है. ओके, डबल हो जाता है उससे. सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. लोग सड़क पे आ जाते हैं इससे. They don't have left anything to pay back. Okay, so that is why being Muslims we strictly follow this. It is strictly prohibited and haram in Islam that we should not follow this. Okay, now simple interest, compound interest. Now this was the basic principle behind it, but how are you going to do the calculations? That's the next part. Simple interest can be calculated. Simple interest की calculation देखेंगे. Simple interest is equals to principal amount times rate times time over 100. अभी देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है फॉर्मूला, बट दिस इज एग्जैक्टली द सेम. फॉर एग्जांपल 10% पे आपने लिया तो 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. लेट्स सपोज प्रिंसिपल अमाउंट वाज $500. ठीक हो गया. 10% ये आपने 5 साल के लिए लिया है टाइम्स 5. सो लुक एट दिस. दिस इज रेट. ओके, एंड देन दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट. दिस इज टाइम. दिस इज सेम फॉर्मूला. कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ये वही फॉर्मूला है जो आप बेसिक परसेंटेज में पढ़ के आए हैं. So S is equal, simple interest is equals to PRT over 100. This gives you the interest on top, how much interest you're supposed to pay. ठीक हो गया. This only gives you the calculation of the additional amount. 10%, 10%, 10%. बार बार 10% लग रहा है. 5 years हो गए तो 1 2 3 4 5. ठीक है. 6 years हो गए तो 1 2 3 4 5 6. इसलिए मल्टीप्लाई भी हम कर देते हैं. This gives you only the interest on top. It doesn't give you how much is the payable amount. Now, in order to calculate the payable amount, you should know how to work out the payable amount. The payable amount was the composition of two things, the principal amount and the interest on top. So the payable amount is going to be the principal amount plus the interest on top. Just for your reference, SI stands for simple interest. P stands for principal amount, the amount which you borrowed as a loan. R stands for rate, that is going to be in terms of percentage. T stands for time. Clear? And A stands for
पेएबल अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द मनी। ओके, मैंने वो पर्सपेक्टिव्स आपको शुरू में लिखवा दिए थे। पी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कि बैंक इसको क्या बोलता है, प्रिंसिपल अमाउंट को। बैंक की नजर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। बैंक की नजर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट। बैंक की नजर में क्या होगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक हो गया। और पेएबल अमाउंट, वैल्यू ऑफ द मनी। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होंगे तो इनकी मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, so these are the two main formulas for the simple interest questions. Okay, इधर से आपने सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल पेएबल अमाउंट में से आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दें कि मेरे एक्चुअली में कितना बारो किया था। 150 लेट्स सपोज इज द टोटल पेएबल अमाउंट, और इंटरेस्ट है इसमें मैं आपको बता देता हूँ 40 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 150 इज द पेएबल अमाउंट, इंटरेस्ट इज 40, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, दिस इज 150, this is 40. How much is this? You're supposed to pay back 150. Okay, the interest on top, like in that 150 is 40. So how much was the principal amount which you actually borrowed? 110. 110 plus 40 is going to be 150. Okay. अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, इनके यूनिट्स अलाइन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है रेट चार्ज हो रहा है 10% पर ईयर, रेट रेट चार्ज हो रहा है 10% पर ईयर, और टाइम वो आपको कहता है यू हैव बोरोड अ लोन फॉर 6 months। तो यहाँ पे आप 6 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे टाइम में, 0.5 का हाफ ईयर। ठीक हो गया, बिकॉज द फॉर्मूला डजंट नो, अगर आप इधर 6 पुट कर देंगे रेट पर ईयर के हिसाब से, आप मल्टीप्लाई में जब 6 करेंगे तो वो 6 ईयर्स बन जाएंगे। 6 months के लिए अगर आपने लोन बोरो किया तो इधर क्या करेंगे 0.5, लाइक 12/6 कन्वर्ट कर लेंगे इसको ईयर्स में, सॉरी 6/12। ओके, इसी तरीके से अगर रेट जो है वो पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, लाइक दे चार्जिंग यू एवरी मंथ, तो टाइम आपने 2 years के लिए लोन बोरो किया है, तो फिर इधर टाइम में क्या डालेंगे, 2, नहीं, रेट पर मंथ चल रहा है, 2 years, हाउ मेनी मंथ्स, 24, so you multiply with 24। ठीक हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, compound interest formula is A equals to P into 1 plus R over 100 whole power T. In some books and some teachers write it down as N, but it's same thing. ठीक हो, I'm using a variable which is understandable. Okay, A is the payable amount, P is the principal amount, R is the rate, and T is the time. Okay. Now, if you look at the main formulas of both, this main formula is giving you just the interest on top, and this main formula is giving you the total payable amount. So if you want to work out the interest here, interest on top. So from the total payable amount, you will take away the principal amount. You will have that how much is the interest on top. So for example, if I tell you that 200 is the total payable amount and 170 was the principal amount, how much is interest on it? 30. Okay, this is how you're going to work this out. इसमें भी रेट और टाइम का ख्याल रखिएगा। ओके, इसमें भी आपने रेट और टाइम का ख्याल, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? नो, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे।
Right, this one. 2 years ago, $540 was put into a saving account to pay for holiday. The account paid compound interest at a rate of 6% per year. How much is the account now? Account now का क्या मतलब हुआ? How much is the account now का क्या मतलब हुआ? What is the meaning? Like, what is the total value of the money you invested into the bank? Okay, so how much was the amount you invested? So this is the principal amount. This is the time. This is the rate. Compound interest. So A is equals to P times 1 plus R over 100 whole power time. If you don't know the formula, I would suggest, as per your capacity and as per your ability, you know yourself better. I would suggest write down this formula multiple times. If you think by writing it down for 100 times, you will remember it, then go for it. ठीक है? 10 दफा लिखने से याद आता है, 10 दफा लिखें. You know yourself better. Okay. Now, what is the question? We need to work out the total amount which is into the bank right now. A is the question here. Principal amount is 540. 1 plus 6%. Time is 2 years. Put this in your calculator and you will have your answer. ठीक हो गया? ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया पीछे. अमाउंट कैलकुलेट करनी है, टाइम भी दिया हुआ था, रेट भी दिया हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट भी दी हुई थी. हाँ, I'm trying to find a question. Last 2-3 years में बहुत ज्यादा frequent आ रहा है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में टाइम अननोन देता है वो आपको. वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. काफी सारे स्टूडेंट्स उसको छोड़ आते हैं या फिर गलत कराते हैं. टोटल अमाउंट निकालनी है, ये भी सेम क्वेश्चन है. चलिए वन लास्ट ट्राई, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. चलें जी, ये क्वेश्चन करते हैं. Okay, Mukhtar has $1,500 to invest in one of the following ways. Account A paying simple interest at the rate of 4.1% per year. Account B paying compound interest at a rate of 3.3% per year. Which account will be worth more after 3 years and by how much? So, account A. Account A is working on the principle of simple interest, isn't it? So, account A की payable amount का क्या formula था? Principal amount plus the simple interest. Okay, that's what we need to work out. A. And simple interest is given by PRT over 100. That P as it is. Simple interest is given by the formula PRT over 100. So let's plug in the values here. Principal amount is
1500 plus 1500, 4.1% for 3 years over 100. So account A, इसकी calculation, anyone? Is in? So 168.4.5. Sorry, Like 1684.5. 1684.5. Yes. Zero. Currency. We're dealing with the currency here. Okay. Okay. Next is account B, which is compound interest. Luckily, the main formula of the compound interest directly gives you the total payable amount. P into 1 plus R over 100 whole power time. इधर मैंने इकट्ठा निकाल लिया, आप पहले इंटरेस्ट निकाल लें, फिर इंटरेस्ट को उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर लेती, वही चीज है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द सिंपल इंटरेस्ट. अच्छा खैर, दिस फॉर्मूला here directly gives you the payable amount. So A is equals to 1500 times 1 plus rate is 3.3% for 3 years. इसकी कैलकुलेशन करें प्लीज. There's 1653.45. 1653.45. 0.45. All right, so which one is paying more? Account A or account B? Account A is worth more. By how much? We need to subtract it. Find the difference between. So we write down account A and then the difference of the two. 1684.50 minus 1653.45. How much is it? $31.05. ये कितना है? ये कितने सेंट है? $31.50. शाबाश. All right, I couldn't find a question where this power is unknown. Now, how to go about it? Let's suppose we are dealing with the same question. And the question is, the $15 आपने investment किया, 3.3% है per year. And your target is that I want to have, let's suppose, $5,000 in my account. तब जाके मैं, तो कितने साल लगेंगे आपको ये कैलकुलेट करने के लिए? Now, basically, the time becomes the variable here. इस सिचुएशन में, तो इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे देखते हैं. So A, yes, there is a 2. So here's the formula which is written in front of you. A is given by the examiner that this is what you need, 5,000. Okay, this is what you need. Principal amount was 1,500. 1 plus R is 3.3 over 100 whole power time. The time is unknown. Now, यहाँ पे ध्यान से सुनना. Those students who are studying, ये अच्छा, first of all तो ये question होता ही नहीं है बहुत सारे students से. Secondly, जो एड मैथ्स पढ़ते हैं वो किसी ना किसी तरीके से कर आते हैं. In add maths, there is a concept. First of all, tell me, is anyone taking add maths? Anyone? No one. Okay, you're taking add maths? Okay, in add maths, there is a concept called logarithms. Okay, by using logarithms, you can find out the unknown power. If you apply that particular concept here, you won't be awarded marks because that's not the learning objective here. लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो ये नहीं है, वो ये चीज एसेस ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं. आंसर तो आ जाएगा बट मार्क्स हो सकता है आपको 1 मिले या 2 मार्क्स मिले इसके मैक्सिमम. सो हाउ टू वर्क दिस आउट द टाइम. इस तरह के क्वेश्चन को आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है. तो यू स्टार्ट ऑफ विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी. आप इसमें 2 पुट करें, 3 पुट करें. आपने ये वाला पार्ट कैलकुलेटर में पुट कर लेना है. टी की वैल्यू चेंज करते रहेंगे.
टी की जगह 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर 4 पुट करें, 5 पुट करें, द मोमेंट यू क्रॉस 5000, दैट्स द नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जांपल इधर 5 पुट करने से यू वर एबल टू क्रॉस 5000, देन दिस फिर टाइम की वैल्यू क्या होगी 5. ठीक हो गया. ट्राई करें जरा इस केस में क्या आंसर आ रहा है. हिट एंड ट्रायल मेथड से करें, टी की वैल्यू चेंज करते जाएं. आप एकदम से टी की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं अगर आप देखते हैं माइनर चेंजेस आ रहे हैं. $5000, 5000 को क्रॉस करना है. एनीवन? 38. वेरी गुड. हु वाज इट? Me, आयशा. Aisha. वेरी गुड. 38 के ऊपर जो है आपका 5000 क्रॉस हो रहा है. 37 पे 4000 समथिंग होगा. 38 के ऊपर जो है आप उसको क्रॉस करें. सो इन दैट केस आपका आंसर 38 ईयर्स होगा. इस तरह का क्वेश्चन लाइक लास्ट 2-3 इयर्स में काफी फ्रीक्वेंट देखा जा रहा है जिसमें ये जो पावर है वो अननोन है. ठीक है. ओके, गोइंग बैक टू द नोट्स. ये इसमें सबसे मुश्किल सवाल आता है जिसमें ये पावर को अननोन है. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही हम एक और थर्ड टाइप भी कर लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्दर डेप्थ में जाते हैं. Now there is another. Compound interest can be related to many things. Compound interest can be related to two things: exponential growth and then exponential decay. Sir, Yep. sorry, I have a question. Yeah. Go on. Is there a way to find the number of years without using a calculator? No. Not that I am aware of. Maybe there is one, but not that I am aware of. I don't know. Okay. There is a shortcut method by using logarithms, but again, sometimes in logarithm you also require a calculator. So hit and trial method? No, you just mention it for. Okay, you just mention it using different values of t. Using different values of t. Both हुआ तो t की different 2-3 values के लिए different answers लिख देना. ठीक हो गया? Okay, exponential growth and decay. Now, taking you back to the basic working principle of compound interest. शुरू में 10 रुपए बढ़े, फिर कितने बढ़े थे? 11, फिर 12.1. Now every year the increase is more than the previous. एक तो increase हो रहा है, फिर प्रीवियस ईयर जितना इंक्रीज हुआ था अगली दफा उससे भी ज्यादा हुआ. तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. शुरू में माइनर चेंजेस आती हैं, फिर एकदम शूट कर जाता है, फिर मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. ठीक हो गया. शुरू में रेट ऑफ इंक्रीज इसका शुरू में कम होता है, वो इंक्रीज रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ना रेट ऑफ इंक्रीज इन द बिगिनिंग इज लेस, इट इज इंक्रीजिंग बट हम क्वांटिटी थोड़ी है, फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिर वो पिछले से ज्यादा होगा, करते 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 फिर जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है. तो जितना हो सकता है यहाँ पे एक साल में लेट्स सपोज $500 बढ़े, इस पोर्शन में हो सकता है एक साल में $10,000 बढ़ जाए, तो रेट ऑफ इंक्रीज बहुत बढ़ जाता है. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक हो गया. इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल डिके नाम की भी एक चीज होती है जिसको इकोनॉमिक्स में या बिजनेस स्टडीज में अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन बोलते हैं. उसमें शुरू में ज्यादा डिक्रीज होता है और आहिस्ता आहिस्ता
रेट ऑफ डिक्रीज कम होना शुरू हो जाता है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स ये फिनोमेना पढ़ते हैं हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट में। फॉर एग्जांपल किसी का मैथ्स 20 है तो हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ साइकिल गुजरने के बाद 10 हो जाएगा। अब कितना चेंज आया? 10 का। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद यस 5 हो जाएगा। अब कितना चेंज आया? 5 का। देखिए पहले 10 का चेंज आया, फिर 5 का चेंज आ रहा है। फिर थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद 2.5। तो टाइम पीरियड उतना ही गुजर रहा है। हाफ लाइफ का जो टाइम पीरियड होता है किसी भी एटम का वो फिक्स डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ किसी का पीरियड 1 ईयर है तो 1 ईयर के बाद 10 का डिक्रीज आया, फिर अगले 1 ईयर के बाद 5 का, मतलब हुआ डिक्रीज है बट रेट ऑफ डिक्रीज पहले से कम था। पहले 10 का फर्क आया था, अभी 5 का फर्क आया, फिर 2.5 का आएगा, फिर 2.5 का फर्दर हाफ करते जाएंगे, फिर इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट। तो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल फिनोमेना है, मेन फिनोमेना वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि जो कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट होती है उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होता है। मतलब अब हाफ लाइफ में कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट 10 था तो 10 का 50% रिडक्शन हुआ है, ठीक है। फिर 10 का 50% रिडक्शन करने के बाद कितना रह गया? 5। फिर 5 का 50% रिडक्शन होगा। तो ये हाफ लाइफ में यही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। And the funny thing is you can apply this formula on a half life as well. The only difference would be, अच्छा एक्सपोनेंशियल डिके और डिप्रिसिएशन पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला ये वाला डिफरेंट हो जाता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। A is equals to P into 1 minus R over 100 होल पावर T। इधर प्लस था, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आप रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल डिके और डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन और एक्सपोनेंशियल डिके की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, जो रेडियोएक्टिव डिके होता है जिसकी वजह से हाफ लाइफ का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी आप ये फॉर्मूला, उसमें अब पैसे तो नहीं है, अमाउंट, अच्छा पी क्या होगा उसमें? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल मास जितना भी था, ठीक हो गया। आर आर उसमें क्या होता है हाफ लाइफ में? आर क्या होता है हमेशा? 50%, वो पक्का होता है, 50% से रिड्यूस हो रहा है। तो कितने टाइम बाद आप देखना चाहते हैं कि वो कितना रह गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाए। फिर डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन होता है पाकिस्तान में, they don't follow the rules of depreciation. I know USA and Japan. I know these countries, maybe there are some other countries who follow the rules of depreciation. For example, if you buy a car, there's a law there that every year 5% of the previous year values में reduce होगी, 5% of the previous year। तो उसमें भी आप सेम, अब वो आपसे पूछता है जी गाड़ी ABC ईयर में आपने ली इतने की, तो 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद गाड़ी की कीमत बताएं कितनी होगी, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो वो आपको रेट दे देगा 5% एवरी, लाइक 5% पर ईयर के हिसाब से वो उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन भी बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट नहीं बोल रहे हम, फिनोमेना वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, तो इसीलिए इसके साथ कनेक्ट किया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का डायग्राम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये जो प्रिंसिपल, ये जो इंटरेस्ट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अनदर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डबल, फिर 2 से वो 4, फिर 4 के डबल होते हैं। जो कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट होती है बैक्टीरिया की वो डबल हो रही है। लाइक द न्यू पॉपुलेशन इज 4, तो 4 का डबल क्या होगा? 8। नाउ द न्यू पॉपुलेशन इज 8, तो 8 का डबल क्या होगा? तो वो 200% के हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला, ठीक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी आपने यही चीज अप्लाई करनी है, लाइक पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक हो गया। अब पॉपुलेशन पी विल बी द इनिशियल पॉपुलेशन, किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं वो एग्जामिनर आपको दे देगा। इवन जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, दैट आल्सो इंक्रीज्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ह्यूमन पॉपुलेशन में डेफिनेटली डेथ रेट भी आ जाता है, बट अगर आप उसको इग्नोर करें तो परफेक्ट ग्राफ इसका ऐसे ही बनता है। जो आप में से हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो अगर यूट्यूब पे जाके देखें, जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्राफ, वो आपको बहुत पीछे से हिस्ट्री से स्टार्ट करेगा। शुरू में बिल्कुल फ्लैट लाइन है, करते 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 एकदम वो शूट कर जाती है, ठीक हो गया। सो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल के हिसाब से ये आगे फर्दर चीजें कनेक्ट होती हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके, या फिर डिप्रिसिएशन। Oops.
Okay, any doubts online students? Any question? Acha, now the Okay. muddiest point, yes, go question. Acha, now the muddiest point in these questions are जिसमें एग्जामिनर आपको स्टक करने की कोशिश करेगा, रेट और टाइम के यूनिट्स में शायद चेंजेस लेके आए, तो वहां पे स्टूडेंट स्टक हो जाता है। दूसरा, ये एक मैंने क्वेश्चन बता दिया जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं कि यहाँ पे अगर टाइम अननोन आ जाता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड एक ही तरीका है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाती है। आपके सिलेबस में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने नहीं, बेसिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस, बट ये बेसिक नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है। फिर इसी को आप कनेक्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके के साथ, तो वो कैसे करना है। सो क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन जब आएगा उस पे साथ ये नहीं लिखा होगा कि ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वो आपको कोई सिनेरियो दे देगा, वो उसमें जो की वर्ड है वो क्या यूज होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है कोई चीज, या फिर डेप्रिसिएशन का टर्म यूज कर रही है। दीज आर द कीवर्ड्स यू शुड नो कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस, दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास अब जो इंटरेस्ट की लास्ट फॉर्म है, हायर परचेज। हायर परचेज भी इंटरेस्ट ही है, बट हायर परचेज अब क्या होता है, इसमें आप पैसों की बजाय आप प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बाय अ मोबाइल फोन और आई वांट टू बाय अ कार, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट। सो कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से दिस इज अ प्रोडक्ट ए, उसकी कैश प्राइस है $1000, उसकी कैश प्राइस है $1000। इफ यू हैव इट, पे इट एंड टेक इट, इट्स योर्स। बट लेट्स सपोज आई डोंट हैव $1000 टू पे इमीडिएटली, देन a company has a plan for me who is selling this product A. They are saying me make a deposit, जिसको हम पाकिस्तान में डाउन पेमेंट बोलते हैं। जब आप गाड़ी बैंक से निकलवाने जाते हैं तो उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, तो बैंकिंग की लैंग्वेज में उसको इनिशियल डिपॉजिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अब इनिशियल डिपॉजिट टोटली डिपेंड्स ऑन अ कंपनी, वो कोई फिक्स अमाउंट रख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल $100, $150, या फिर कोई पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं कि वो मल्टीपल अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस प्लान के ऊपर, तो वो कोई परसेंटेज सेट कर देते हैं कि उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल वर्थ का 10% जो है वो आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है। तो अब $1000 की चीज जो है तो $1000 का 10% आपने इनिशियली डिपॉजिट कराना है। आपके पास $5000 की कोई प्रोडक्ट है तो $5000 का 10% जो है आपने इनिशियल डिपॉजिट कराना है। सो इट कुड बी अ फिक्स्ड अमाउंट और परसेंटेज। ठीक हो गया। साथ में वो आपको कहता है प्लस एवरी मंथ यू नीड टू पे, लेट्स सपोज $100 फॉर 2 years। अब हायर परचेज का मतलब क्या है? हायर आपने किराए पे ले ली और किराए पे खरीदी। किराए पे खरीदी का मतलब जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं होती तो ओनरशिप आपकी नहीं है। आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया, आप चीज ले लें, आप इस्तेमाल करें, जब आपकी ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी तो ओनरशिप आपकी हो जाएगी उसकी। So this is how it works. So this is also an interest, a form of an interest. Now let's suppose a scenario here. वो एग्जामिनर कहता है 10% डिपॉजिट दे दें। कितना डिपॉजिट दे दें? So what would be the 10% of 1000? 100. So this is what you have given, and you have taken the product A for your own use. Plus $100 for 2 years, every month, $100 per month for 2 years. तो आपने $100 कितनी दफा पे किया? Yes, so $100 I have paid 24 times. So $100, which was the initial amount which I paid, plus 2400, तो मुझे यही सेम आइटम कितने का पड़ा? 2500 का। ठीक हो गया। तो इसमें जो एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी? इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया? 1000। Okay, so this is known as hire purchase. This is another form of interest. Any question? इसके भी क्वेश्चंस आते होते हैं।
नाउ दैट्स ऑल। अब मैंने आपको जल्दी से टोटल चीजें हम काउंट करते हैं। इसके क्वेश्चन इतने मुश्किल हैं, बुक में पता नहीं 2-3 चैप्टर्स के ऊपर है ये सारा काम। हमने गिनती के अंदर क्या क्या किया, इसके अंदर काउंटिंग के अगर देखें, रेशो 1, comparison of two things in terms of percentage 2, finding a specific percentage value 3, finding the total amount like 50 is 25% of what 4, increasing decreasing percentage 5, reverse percentage 6, simple interest and compound interest 7 8, और इसी के साथ ही ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके, ये टोटल 8 ही हुए, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 9th हायर परचेज। That's complete everyday mathematics, household finance, basic numbers, ये सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक हो गया। नाउ अब आपको पेपर 2, IGCSE का पेपर 2 और पेपर 4, GC का पेपर 1 और पेपर 2, इससे 24 मार्क्स, मैंने शुरू में बताया था, इससे रिलेटेड 24 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यू शुड बी एबल टू हैंडल देम वेरी वेल। इसकी वर्कशीट आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा गूगल क्लास, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। इसके क्वेश्चंस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। कल हम इसी की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन इसके निकाल के लेके आऊंगा इंशाल्लाह। फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो हम चलेंगे। हमारा वेरिएशंस हो गया, के मेथड, यस यस, रेशियो मेथड भी हो गया, के मेथड भी हो गया, परसेंटेजेस भी होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने की है ना, ठीक हो गया। शेप्स पे आ जाएंगे, चलिए अब शेप स्टार्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Sir, I'm confused. Where did the 24 come from? How many months in 2 years? Oh, okay. Okay, so you're paying $100 every month for 2 years. Okay, so you have paid $100 24 times. Okay, Okay, thank you. all right, welcome. I know I've gone a bit faster than before, but don't worry about it. Inshallah, once we do all the questions, I'll be sharing these notes as well today, so that once we are doing the questions, you can refer back to these notes. All right, take good care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.